कि आप हॉलीवुड में काम कर रहे हो, यहाँ काम कर रहे हो. आई थिंक योर ब्रांड वैल्यू इज एज मच एज यू डिलीवर, एंड आई थिंक इट इज एज मच एज वॉट योर पर्सनैलिटी इज. हर एक ब्रांड की एक पर्सनैलिटी होती है. When Indian actors go abroad and work in TV shows or films, and when they come back, do you think they get better deals, better remuneration, and better brands? I didn't understand your question only. मतलब मेरा ये है कि जब इंडियन एक्टर्स बाहर जाके काम करके आते हैं, लाइक वेदर दे वर्क इन टीवी और फिल्म्स, एंड व्हेन दे अगेन कम बैक टू इंडिया, आपको लगता है जो उनको ब्रांड्स होते हैं वो वैल्यू ज़्यादा करते हैं, रिम्यूनरेशन ज़्यादा मिलता है, एंड दे आर बेटर डील्स मिलते हैं? लाइक वर्किंग इन अब्रॉड डज मेक देम अ बिगर ब्रांड? No, that means if you work abroad also doesn't mean anything ना. आप अगर abroad जाएं और वापस यहाँ आए, आपकी सैलरी बढ़ेगी वो पता नहीं मुझे. तो I don't know, it's the same thing कि आप हॉलीवुड में काम कर रहे हो, यहाँ काम कर रहे हो. I think your brand value is as much as you deliver, and I think it is as much as what your personality is. हर एक ब्रांड की एक personality होती है. Very intelligent. Thank you so much. I am very intelligent. A little birdie told me that you asked her to criticize you. Why would you do that with your mom-in-law? No, why? But why not? I'm saying like be open and say what she would feel. So now you all will know tomorrow. Fantastic. All right. So, where are my questions? Very quickly, I will ask my last question. One learning from season 1 to season 2 that really cut code with you. Okay, you know what? This is going to stay with me. It's like a personal impact that it made on me as you went along from being an RJ on season 1 to season 2. Something that you will take forward also with you, hopefully in season 3. I think that we're still not done with what women want, because there's so much to talk about, or so much to dig into, which that season 1 wasn't enough, इसलिए हम season 2 पे चले गए. Season 2 में of course बहुत बातें हुई, बहुत अलग अलग कहानियाँ दर्शाए गए, दिखाए गए, लोगों ने सुना कि कैसे people have, whether it's self-love, whether it's women's safety, बहुत बहुत अलग topics, family, like my mother-in-law has spoken about, Saif has spoken about being a modern husband. But I feel that we're somewhere not done yet, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हम औरतें जो है हमारी दिल कभी भरती नहीं है और पेट भी भरता नहीं है. तो वैसे भी आई होप कि हमारे लिसनर्स के पेट नहीं भरे और हम सीजन 3 की तरफ जाएं और बातें हों हमारे इस देश में कि विमेन के बारे में खास करके कि उन्हें क्या चाहिए एक्चुअल में. एंड आई होप दैट द शो गोज ऑन फॉर एवर, बिकॉज यस, we'll never know. We want women to always keep asking questions and telling their stories. What women want? To always know what women want. For the win!